of expertise is the criminal law, so we wanted to be assisted by him. Ji, and I will, since we are running against the clock, I would request my colleagues to keep the questions to a minimum and preferably after he concludes. Bismillah kijiye ji. अगर इजाजत होती है प्लीज क्रिमिनल पे इन्होंने बात करी तो बाद में कर लेते प्लीज आप तशरीफ रखें ना, आपको सुनेंगे, हमने कह तो दिया है आपको. Thank you very much, sir. जी Sir, with your permission, I will make a request, sir. जी जी. Sir, the first issue before your lordship is the pure constitutional issue. That is the interpretation of Article 186 of the Constitution. A very exhaustive and elaborate submissions had been made by the learned Amicus, and assistance rendered by them is serious, is valuable assistance they have rendered. But your lordship, as I believe, has not decided that issue so far. So my humble request would be the issue which I am dealing, though legal to some extent, but it is factual as well. So my submission would be, my request would be, kindly consider my submission as if you are hearing the appeal in 1978. Kindly consider in that context. The decision is yours. You may, after considering my submissions, our submissions, other submissions on the facts and the law, may come to the conclusion that there is nothing wrong with the trial. It was a fair trial. Everything happened in accordance with law. But if your lordship comes to a different conclusion, then it will be exclusively your lordship's domain to use that opinion. But I will not insist that it should be used in a particular way, a particular fashion. But kindly, when I'm making submissions, so those submission would be. If I may just interject here. Yes, sir. In a criminal appeal, there are some minor points and there are some very major points. Yes, yes. What we will look to you. Oh, a major point. No, major point. The kind of points which should shake someone's conscience. That sort of point. Not the someone's statement was not or something technical like that. No. So we will certainly consider it, and we didn't want to break it up into two sessions. We just wanted to hear everything, and if you're not persuaded by the first limb, naturally your effort may go to waste, but it will still be a good lesson otherwise for students of law. Sir, I will be precise. I will be. So let's start. Point. Please. No, sir. First of all, I have prepared a summary of the case, and I believe copies have been provided to your lordships. CMA? Not CMA, sir. Okay, you're doing so now. So this is the summary of the case. Sir, this incident, your lordship have got the copies? Yes. Yes. It will be there then. So this incident, as per prosecution, took place on the intervening. Your lordship need not to take the notes because I have mentioned everything. On intervening night of 10th and 11th of November 1974 at around 12:30 a.m. It was night time. And it took place in Lahore, Shadman Chowk. Those learned judges who are from Lahore know this place very well. It is in the almost heart of the town, hardly 2-3 kilometers from the governor house. So this is it was even at that time in 1974, it was a populated area. And so this matter was reported to the police on the same night. In fact, a written application which was signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri
was submitted to Abdulaziz Sub-Inspector Police Station, Gulbagh, Lahore at 3:20 a.m. And it was submitted in the FIR, it is mentioned it was submitted at the United Christian Hospital, which is commonly known as American Hospital. Deceased in this case was the real father of Mr. Ahmad Raza Kasuri, Nawab Muhammad Ahmad Khan. And sir, his post-mortem report reveals that he had 2 firearm injuries on the head. One is entry, other is exit, and 2 abrasion, very small abrasion, one on the right arch, other on the left forearm, but none was injured in this incident. The case was registered at police station Ichra on the same night at 3:45 a.m. FIR number I have mentioned, this is 402. It was registered under section 307 and 302 PPC. Sir, investigation started. May I ask how far is Ichra police station from the place of incident? Hardly 2-3 kilometers, hardly. It is the closest police station. Yes. It was within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered, though his statement was recorded by a sub-inspector of a different police station. It was recorded by a sub-inspector who was attached with police station Gulbagh, Lahore, but this place falls within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered there. It was 2-3 kilometers from the place of Ahmad, so why 307 was inserted? So this was firing. They had the intention to kill a person, but even if he did not receive injury, 307 is detected. It is now 324. Now it is 324. At that time it was 307. 307. Yes. So this investigation started on the same night by the SHO Ichra, Abdul Hai Sub-Inspector, and investigation remained with the police station till 14th of December 1974. Thereafter, it was transferred to CIA Lahore by the order of then SSP Lahore. And I will make the detailed submission how it was transferred and where it is mentioned. And so the next important point, the most important point in this case, close of investigation. On 1st of October 1975, a report was prepared within the provision of rule number 25/57 of Police Rules 1934 on the form that is 25.57 within bracket 2 of the same rules by Abdul Hamid, Inspector CIA Lahore. This report was signed by the DSP Ichra Circle, then SP Kent, and then finally it was approved by the magistrate. Before we go forward, the FIR, what was who was accused in that FIR? FIR, nobody was accused. What was the written application of Ahmad Raza? But I'm just giving you the brief summary. I will make the detailed submission on every aspect of the case, but I'm just giving you the brief summary of what the prosecution case was. Then the report was finally submitted to the magistrate and he passed an order on that report. I agree with the police report. That is in Urdu. I will read that. That is available on the record. Then, sir, Police report regarding closing of the case? Yes. Closing of the investigation, because they mentioned that we have not been able to trace the culprit. Traceable. And then there's Or do they use the word untraced or not traced? we could not trace the culprits. Untraced or could not trace, same meaning. But I will read that as well. I will read because I'm just giving you the summary of the thing. Then, sir, that order of the magistrate. Police rules दीजिए. Police. आप if you don't mind जरा सा आप notes कर ले.
we will certainly hear Sir, you. I will make it clear, Bhutto was not named and is accused. Okay, we will read There it. was just a mention that he uttered such and such words. Please, sir, I will not make any incorrect statement. Ignore that. No, he was very respectable for me. We will read it, whatever the document says, it will say. Whatever I say, Is that FIR available on the record? Yes, I will refer. I will refer to the SIR. Now, please, I am just. Ek second. On behalf of the learned Amicus, we've appointed him to assist the court. He's not a party in this case. If the learned Amicus has its human error, he may have made a mistake. Please note it, and when your turn comes, you can respond to it. But let him continue, because if his chain of thought is broken, then we'll spend more time unnecessarily. So I would request all, please note your points. When your turn comes, we'll certainly hear them. Sir, Ji, aap par chalein, no, sir, no problem. Manzoor sir. No problem. So then this investigation was closed. I will make detailed submission. I will repeating this. Chalein, haan. Then, sir, there is an observation of the Supreme Court of Pakistan about this closure of investigation, and that is at page 9 of the majority judgment. The Honorable Supreme Court observed in October 1975, the case was filed as untraced by DSP Muhammad Waris after obtaining instructions from the provincial government through Inspector General of Police. So my respectful submission would be that this observation is not in accordance with the facts of the case, because the order was by the magistrate and not by the IT. Then, sir, the next important phase is the re-investigation. As per record of which is now available before your lordship, I will refer it subsequently. This re-investigation was started by FIA, Deputy Director FIA. His name is Abdul Khalid. He appeared as PW 41 on 24/7/1997. And on the same date, Arshad Iqbal and Rana Khar, who were subsequently declared accused, were examined, interrogated. Then the Zimni is there. I will refer that as well. 1977. 77. It is at page 3, sir. It is at page 3. However, so you are saying that after closure of the case, which was in 75, 75, 76. It was no, 75. no, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards. Yes. On whose order was सर मैं इसमें डिटेल सबमिशंस भी आऊंगा. मैं जस्ट आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. ना बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation as per record which is available before this court started on 24th of July 1977. But surprisingly, the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. An investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for reinvestigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your lordship has posed. No order, written order is on the file regarding reinvestigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go. Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. But you will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan
was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmad. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day, the magistrate passed an order on the incomplete challan, and the matter went to the court of session. And that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977, wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC, and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41. Defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially, it was 9-member bench. Yesterday, your lordship has been informed to how the 2 judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly, they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... दे दिए? Okay, fine. Please proceed, Ji. Sir, please. And now, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page. You're referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship. आपने दिया है? नहीं सर नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file your lordship wanted to see where the original volume कौन सी? क्या? Volume कौन सी? कंप्लेंट की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR को इतनी क्लियर नहीं है, वही उसका वो अगर. Where is that? It is sir at page 310 volume 7. ये दे दो, ये दे दी.
Volume 7. वॉल्यूम 7 ये सर बड़ा ही इसको बड़े ही मैं आई डोंट हैव द वर्ड्स टू यूज किस तरह इसको in 310. लिसन वो पढ़ लेना फिर इसमें नहीं है है सर वॉल्यूम 7 वो वॉल्यूम गलत लिखा होता है ना जी, ये बड़ा रिकॉर्ड जो है ना इसको ये है ना volume प्रॉपर्ली 7. इन्होंने ये बनाया। उर्दू में जो लिखी है. जी सर वही है, कॉपी है एफआईआर की इसमें नहीं कॉपी नहीं है सर, मैं आई एम रेफरिंग टू द एप्लीकेशन। ये उर्दू ये वाली. ये वाली बिल्कुल यही वाली। हाँ ये पढ़ लें जरा. मैं इसकी बेटर कॉपी दी है ना जी, मैं वो पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा. I have supplied the better. 310. So your lordship have got this? 310. जी we got it. Shas मेरे को just. But we don't have the better copy. 301 यार दोनों। Have you given it now? Yes sir, yes. वो better copy दे दें हमें. दूसरी दे दो। चले ये भी पढ़ी जा रही है। चले सर नहीं वो बड़ी जरूरी है, बेटर कॉपी आप दे ना। legible copy हम पढ़ सकते हैं. It's quite clearly written. आप पढ़ें. ये बहुत साफ लिखा है इन्होंने. बेटर कॉपी यहाँ पे बेटर कॉपी है सर। Legible. किधर है? वो दी भी है। अब किसी यही और है को दे ना देना. जी, सारा यही काम है। नहीं कर पा रही हैं तो किसी और को दे दें. एक आदमी उधर आधे इनको दे दें, आधे इनको दे दें. हाँ. जी बता दें. इसी में पढ़ूं जनाब पढ़ूं। बस एक अगर आप बुरा ना माने, मुझे पसंद है लफ्ज लेजिबल कॉपी. बेटर से लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट आ गई होगी. अब वो यही हम यूज ये करते हैं, बट ठीक है आप इसको चले जी बिस्मिल्लाह. हम ये हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हम हाँ वो आई नो वो डेवलप हो चुका है, मगर हम उसको कोशिश करें. हाँ पढ़िए मूर्खा. जी एक सेकंड सर, वो जस्टिस शाह इज लुकिंग फॉर द कॉपी। जी प्लीज आई एम यू गॉट इट सर? जी वही चीज एफआईआर में भी लिखी हुई है जो- जी बिल्कुल वही है, ये जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस सर, इट इज फॉर योर कन्वीनियंस। जी पढ़ ले। मोरखा 17/1/1972 को आज से कबल कसूर में मुझ पर बजरिया फायरिंग कातलाना हमला हुआ और मुझे गोलियां भी लगी, जिसका मुकदमा थाना शहर कसूर में दर्ज है। उसके बाद मोरखा 24/8/1974 को इस्लामाबाद मुझ पर खुदकार आला से हमला हुआ, जिसका मुकदमा भी थाना इस्लामाबाद में दर्ज है, जिनमें मुफस्सल हालात दर्ज है। परसों 9/11/1974 को मुझे मोहम्मद हनीफ इलेक्ट्रिशियन ट्यूबवेल मॉडल टाउन सोसाइटी ने बताया कि एक यौम कबल 4-5 आदमी मेरे घर का पता दरियाफ्त कर रहे थे और मेरी तलाश कर रहे थे। आज करीब 12:30 बजे रात मैं माँ अपने वालिद नवाबजादा एम.ए. खान, मेरी वालदा और अपनी खाला मिसिज आगा मोहम्मद महजी अपनी कार नंबरी LEG 9495 पर सैयद बसीर हुसैन शाह की कोठी वाक़ शादमान कॉलोनी की शादी से फारग होकर कोठी से शाह जमाल की जानब जा रहे थे। मेरी कार दाएं हाथ ड्राइव है, जिसको मैं खुद चला रहा था। मेरे बाईं तरफ मेरा वालिद नवाबजादा एम.ए. खां, मेरे अकब में पिछली सीट पर मेरी वालदा और उनकी बाईं जानब पिछली सीट पर मेरी खाला बैठी थी। जब गोल चक्कर के करीब कार आई तो अचानक दाईं तरफ से मेरी गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई, जो तकरीबन 100 गज तक मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई। चंद एक गोलियां मेरे वालिद को सर पर लगी, उनका काफी खून बहने लगा और कार दाईं तरफ से चलनी हो गई, जिसके शीशे टूट गए। मैं अपने वालिद को कार में सीधा अमेरिकन हॉस्पिटल UCH गुलबर्ग ले आया, जहां पर मेरे वालिद फायरिंग के जख्मों की ताब ना लाकर जान बहक हो गए। ये फायरिंग खुद कार आला से की गई, जिसमें मेरे वालिद नवाबजादा एम.ए. खान कत्ल हो गए हैं। ये फायरिंग मुझ पर सियासी वजूहात की बिना पर कराई गई है, क्योंकि मैं कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर हूँ और तहरीके इस्तिक़लाल का, जो कि मुल्क की सियासत में हुकूमती पार्टी का डटकर मुकाबला कर रही है, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद करता हूँ। याद रहे कि जून 1974 में कौमी असम्बली में मिस्टर
मिस्टर भुट्टो ने मुझे मुखातब करके कहा था कि मैं इस शख्स से तंग आ चुका हूँ, ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड और अखबार में मौजूद हैं. No, sir, this FIR, as your lordship have seen, it has three parts. Number one is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number two is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number three is his assessment, his opinion, his guess, or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the three portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those two FIRs that you mentioned in the first part, yes. Is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record, it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There It was unknown person? So far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some Man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was. Have you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है. पता है क्या फिर वो उसमें सारा- उन्हें जिक्र किया. सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है. मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा Okay, ठीक है. चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस. वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाए. Now I am referring to the second part of this FIR. And I will very fairly, I will say, this is the very good narration of the events, so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fire hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the which has been described, and this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. वो मैं सर उसको भी Either there is only one. वो Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the event, so he could not see how many injuries on his head. Obviously, blood was oozing. So that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ground पे आप bail देते थे. पता नहीं मैं क्या करता. नहीं, और दूसरा चलें, please proceed जी. अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए. In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my lord was asking the question, who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it. Again, I will say it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So It is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. This is an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation.
But I don't want to much time spend on this aspect of the matter because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Kasuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं वो बात तो ये ना जी कि हमने तो ये देखना है जनाब। तो बात है FIR में ऐसा लगता है। मैं आज करने लगा हूँ। नहीं आप बात सुन लीजिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था, इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी। नहीं राइट हैंड लिखा है, राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा। वो अटैक रात को 12 बजे जनाब, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता। और दिस वाज 74, कुछ स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऐसा इशू नहीं है। मैं क्योंकि माय लॉर्ड हैज सेड कि जी टाइम का मसला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो वक्त है ना जी उसको इसको हम बाद में डील कर लेंगे। फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया। अब वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ। ये पेज है 39, पुलिस फाइल नंबर 6 आपके पास है जी। और एक तो पुलिस फाइल है ना जी जो हाथ से लिखी है, ये बेटर कॉपी है। निकालो पेज, पेज 39। ये चलान है? नहीं सर, ये वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैंने कहा ना जी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती रही, फिर उसके बाद ये CIA को ट्रांसफर हो गई। मिल गया जनाब को पेज? पढ़ूं मैं? नहीं जरूरत है आपको पता नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक। नहीं मेरा मतलब आपने कह दिया तो ठीक। इसमें सिर्फ ये है, मैं खास बात है तो बता दें। मैं सिर्फ ये अर्ज करने लगा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर फलां के तहत ये CIA को ट्रांसफर होगी। अगर जनाब ने पढ़ लिया तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है। बेसिकली आप चालान पढ़ना चाहते हैं? अगर चालान, वो चालान से पहले मेरी गुजारिश ये है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जनाब को बताने लगा हूँ कि ये क्लोज कैसे हुई, किसके ऑर्डर से हुई और किस तरह री इन्वेस्टिगेशन हुई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड योर लॉर्डशिप हैज फ्रेज्ड द क्वेश्चन कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई नीड योर काइंड इंटेलिजेंस ऑन दिस पॉइंट। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो सर, योर लॉर्डशिप काइंडली सी this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.5557, 25.57, and Police Rules 1934. The form is 25.572, and it was prepared by Abdul Hamid, and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. जी मिल गया सर? मिल गया। ये पढ़ूं सर? फॉर्म 105 ये तो मुझे FIR नजर आ रही है। नहीं सर, नहीं FIR नहीं है। फॉर्म रिपोर्ट खात्मा ज़ेर दफा 173। वो 173 में ये रिपोर्ट वही बनती है। बेसिकली रूल इसका डिफरेंट है, मगर उसकी बॉडी में वो सारी बातें लिखी हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ इसको। अगर आप समझते हैं पढ़ना चाहिए। बड़ा जरूरी है। पढ़िए। इसमें नहीं मिलेगा सर, ये पुलिस रूल्स डिफरेंट है। दोनों हम देख रहे हैं। आप मैं दोनों बातें 173 है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की। वो क्लोजर रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है। आपकी आंखें बहुत तेज है, मैं समझा आप देख नहीं सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी आइए सर, इसको पढ़ लेते। ये मैं रेलेवेंट पढ़ूंगा सर। जी, पहला तो ये है ना, ये जो पहला पैरा है ये मैं नहीं पढ़ता क्योंकि ये सारा FIR है। अब मैं सेकंड पढ़ना चाहूंगा। हर पहलू पर तफ्तीश होती रही। आज तक की तफ्तीश से मुकदमा हाजा में कोई सुराख मुल्ज़मान ना मिला है। मुकदमा हाजा में अब तक कोई मुल्ज़म गिरफ्तार ना हुआ है। मुकदमा हाजा काफी दरीना हो चुका है। दरीना मतलब सर पुराना, आई बिलीव इट्स पर्शियन वर्ड। दरीना हो चुका है जिसमें सुराख
बरारी का कोई फिलहाल इम्कान ना है। मुकदमा को मजीद ज़ेरे तफ्तीश रखना महज बेसूद और तोसीउल वक्ती है, लिहाजा मुकदमा हाजा में रिपोर्ट कायमा बसीगा अदम पता, ये है जनाब वो जो बसीगा अदम पता, नो क्लू नो ट्रेस, मुरतब करके बमराज समात अरसाल है। बाद मलाजा मिसल मुकदमा हाजा को अदम पता दाखिल दफ्तर फरमाए जाने का हुक्म तहरीर किया जाए। ये तफसील लिखी है सर। और उसके बाद ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये इसके दक्षत हैं डीएसपी और उसके नीचे एसपी के हैं 24/4/76 को। और फिर बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है। ये 9/5 नहीं सर नहीं, ये किसका है? 9/5 किसका है? ये इंदराज शुदा है जी, ये तो अच्छा, इंदराज शुदा, एंडोर्समेंट है। हाँ 3/5 3/5 और उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं हस्बे इस्तदा पुलिस मुकदमा बसीगा अदम पता दाखिल दफ्तर हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इन्वेस्टिगेशन वाज क्लोज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। द पुलिस जस्ट रिकमेंडेड। ये जो हर पहलू का लफ्ज लिखा गया इस तरफ, राइट, हर पहलू से मुराद वो जो कॉन्स्पिरेसी वगैरह तमाम Everything, हर पहलू, they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report, and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. ये ऑर्डर आज तक इंटैक्ट पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल इंटैक्ट है। इंटैक्ट पड़ा हुआ है। और आप ये कह रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायसनेस जाहिर करती है विदाउट बीइंग सेटिस्फाइड द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। से भी अगली चीज पे वो चली जाती है। अब बायस का तो उर्दू तर्जुमा मुझे नहीं पता, मगर अगर आप मुझे उर्दू में पूछेंगे तो ये बददियानती जाहिर करती है। बायस तो बड़ा सिविलाइज सा वर्ड है ना जी। बदनीयती, बदनीति नहीं, बायस और चीज है। अब आई डोंट नो द एप्रोप्रिएट वर्ड इन उर्दू। तासुब, यस, वो तासुब है, बायस तासुब है। दिस इज नॉट बायस, दिस इज बदयान। ये एस्पेक्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया या नहीं? नो, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इतनी लंबी जजमेंट्स हमें नहीं पता सर। वही तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ दी इस पॉइंट पे कि उन्होंने कहा कि ये क्लोज किया गया और उसके बाद ये FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दैट्स ऑल। वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का तस्करा नहीं किया। नो। लेकिन आपके ख्याल में जब ये चालान आया तो वो तो मैजिस्ट्रेट ने उसको इंडोर्स किया, तो डोंट यू थिंक इट वाज एन इम्प्लाइड? नो सर, चालान तो एक सब्सिक्वेंट स्टेज है ना, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। इंडोर्स नहीं किया उसने। आपसे इसकी बात कर रहे हैं, सपोर्ट की। आप देखें ना, ये आप पेज 4 पे आ जाए ना। नहीं 4 उसको छोड़े सर। हाँ, आप एक चीज है, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने एक चीज को क्लोज किया है तो उस ऑर्डर को उनने it had to be set aside या it had to be recalled. Yes. That wasn't done. सही। ये कहा जा सकता है जिससे हम आपकी इसमें हम वो मांग रहे हैं असिस्टेंस के। ठीक है, there was no recall of that order, but what about जब चालान दोबारा से आया और वो आगे जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट सेशंस को भेजेगा, तो उसने वो चीज देखा, will that not compliance तो नहीं हुई फिर? No sir, no. Magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the court of session. He cannot pass any order except that this file be sent to the court of session. Yes. This is for the session court, and from session court this case went to the high court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further,
how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the High Court or the Supreme Court. There's nothing. तो मलिक साहब इसमें FIR दाखिले दफ्तर कंसाइन टू रिकॉर्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुई है FIR। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ई में गई ना सी में गई। नहीं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और दूसरा एक चीज ये फिर फरमाइएगा कि इसमें फिर री इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर हुआ तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि री इन्वेस्टिगेशन पे तो अभी हम आ रहे हैं। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लूं मैं कि ये ऑर्डर किया किसने क्लोजर का, मैजिस्ट्रेट। अब इसको रीओपन करने के लिए इट इज क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस कि यू विल गो टू द मैजिस्ट्रेट साहब, वी हैव दिस फ्रेश एविडेंस एंड काइंडली We got the point. Next point. साहब उनको भी तो जवाब देना है अगर इजाजत दे। मैं आपसे पूछ रहा था कि FIR कैंसिल तो नहीं हुई नहीं बिल्कुल नहीं हुई। री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होना हो सकता है री इन्वेस्टिगेशन वाज परमिसिबल बट ऑफ कोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ you have to follow a procedure for With the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you are. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine. नहीं, ये सब का मकसद ये था कि जो subsequently ultimately चालान जब आया, उसी की बात कर। अगर उस वक्त जब चालान आया तो जब वो ऑटोमेटिकली सेशन कोर्ट में चला गया, it doesn't amount to endorse the second investigation. Not at all. उसमें तो ये चालान जब आया मैजिस्ट्रेट ये तो कुछ वो करेगा ना, जब आप सर ये तो सिचुएशन आएगी ना कि अगर आप मुल्जिम को बुलाते हैं तो वो ये पॉइंट रेज करेगा ना, मैजिस्ट्रेट को कहाँ से पता चलेगा? उन लोगों ने देखा ही नहीं इसको। नहीं उन्होंने तो देखा नहीं, मुल्जमान तो थे नहीं मैजिस्ट्रेट के पास, एंड इवन दे डिड नॉट गो टू द सेशंस कोर्ट। ये तो अब अगली स्टेज आएगी, पहले मैं खैर इसको जरा डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम क्लियर नाउ सर? जी थैंक यू। Then sir, how this re-investigation started? वो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दी, PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53 पैरा 9 पेज 61 पे ऑब्जर्वेशन है कि how this was closed and how the re-investigation started. Your lordship may read it. अब टाइम का प्रॉब्लम है ना, मैं अब अगर कहते हैं तो पढ़ देता हूँ। तो उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट का जिक्र ही नहीं किया। नहीं उनको बिल्कुल नहीं किया। जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये क्लोज की है DSP ने आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर पुलिस हायरार्की, IG, DIG, whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and reinvestigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to it's a very important question my Lord has asked, but now I'm moving towards that. नहीं ठीक है, वही जी अब सर वो इशू भी है ट्रिब्यूनल वाला, बट दैट आई विल डील सब्सिक्वेंटली। वो जो ट्रिब्यूनल में जनाब ने कहा शफी रहमान साहब का ट्रिब्यूनल है, उसमें भी मैंने नोट किया हुआ है जिसमें कसूरी साहब ने कहा कि ये मेरा नाम लिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वो भुट्टो साहब खुद हैं, हो सकता है कोई उनकी बात सुन के कोई दूसरे ने कर दिया, ये उनका बयान है ट्रिब्यूनल। अब now कमिंग वो, बट मैं अभी अगर करूंगा तो ये सीक्वेंस आप चलें जैसे आप करें, वो मैंने वैसे क्लियर कर दिया आपको कि वो वहां जो ट्रिब्यूनल में बात क्या है। नाउ सर वी आर कमिंग टू री-इन्वेस्टिगेशन। Now, if your lordship kindly look, file number 21, Zimni number 96. 21 ये भी है? 21 भी है सर, 3 है बहुत बड़ी बड़ी, और इसका एक तो ओरिजिनल थी, फिर उसकी ये कॉपी, फिर मैं इसको कहूंगा वॉल्यूम 21 निकालो। ये है फाइल 21। थैंक यू। उसका भी अब वो पहले उसका इसके 21 पेज, इसका पेज है सर 1। जिमनी नंबर क्या बताया मलिक? जिमनी नंबर सर 96, टॉप पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ जिला लाहौर लिखा है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है रिपोर्ट जिमनी 96। वॉल्यूम 21 का है भाई। बड़ी मुश्किल से सर ये रिकॉर्ड आई विल से इट्स नॉट प्रॉपर्ली बीन
रेंज और उसका मार्किंग और नंबरिंग भी बड़ी, कोई फाइल किधर है कोई किधर है, बहुत टाइम लगा नंबर के लिए क्यों पड़े में 22 है उर्दू में है। दूसरा माइक करीब बताओ, सिर्फ पेटेंट करो माइक दूसरा बताओ कौन सी फाइल कौन है सा पेज है मंसा? सर? पेज 1। ये आपके पास कौन सी फाइल है जनाब? ये फाइल नंबर 21। ये इसका पहला पेज। ये 4-5 पेज हैं जो इंडेक्स है, उसके आगे जो फर्स्ट पेज है ना बेटा, ये दिखाओ। बेहतर कॉपी किस चीज की है? जिमनी की जी सर, ये मैं आपको क्लियर कर दूं ठीक है। कि ये हुआ ये कि ये जो जिमनियाँ लिखी जाती हैं, माय लॉर्ड नोज इट वेल, ये हाथ से लिखी जाती हैं। ये सारी फाइलें हाथ से लिखी हुई हैं, मगर शायद जनाब की असिस्टेंस के लिए किसी ने इसकी कॉपियां करके भेज दी। बट मैंने वेरीफाई किया, जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने हाथ की लिखी हुई में भी पढ़ी है। अगर जनाब हुक्म करेंगे तो मैं वो भी रेफर कर दूंगा। नहीं आप कह रहे हैं उसी के मुताबिक हमें पूरा तसल्ली है। फाइल 21 का पेज क्या पे? 1 सर 1 आपके पहले 3-4 पेज छोड़ देना सर, वो इंडेक्स है। ये इंडेक्स के 3 पेजेस हैं, ये छोड़ दें, इसमें सारी वो डिटेल है। इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप हमें? सर मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। पढ़िए। ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे? जी हाँ, वेरी राइट। ये एज माय लॉर्ड जस्टिस मदर वाज आस्किंग सर, दिस दे आर नॉट टॉकिंग एंड मैडम दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। आई विल नाउ कम टू द और वेदर देयर वाज ऑर्डर और नॉट, दैट इज जस्ट समथिंग एल्स। साथ ये भी बता दे कि हु इज कॉम्पिटेंट टू पास ऑर्डर फॉर रीइन्वेस्टिगेशन। पहले एक से गल कर चलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ऑलवेज लव द क्वेश्चंस and I'm ready to answer every question, but the problem is, as of my lord has said, नहीं आप चलें आप अपने तरीके से चलें। नहीं मैं आपके तरीके से चलूंगा। नहीं हम बाद में सवाल पूछेंगे। चलें आप चलिए। अगला मैं इसको पढ़ता हूँ। ये आप अपने राइट हैंड साइड पे देखिए 24/7/1977 और उसके टॉप पे लिखा है मुरत्तबा अब्दुल खालिक DD FIA। मुरत्तबा का मतलब है कि हु प्रिपेयर्ड इट, अगेन इट इज अ पर्शियन वर्ड मुरत्तबा। अब ये लिखते हैं जनाब अली रिपोर्ट जिमनी नंबर 95, ये पिछली का हवाला दे रहे हैं। मोरखा 1/10/75 तहरीर है हस्बे एहकाम मरकजी हुकूमत FSF की कार्रवाइयों के बारे में इंक्वायरी शुरू है। ये इंक्वायरी हाय मोरखा 13/7/1977 से जारी है। FSF का रिकॉर्ड मुलाजा किया जा रहा है और मुतलका अशखास व मुलाजमीन FIA से खुफिया दरियाफ्त जारी है। इस दौरान में FSF के खिलाफ अवाम की शिकायत भी ज़ेर दरियाफ्त है। नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल भी खुफिया तौर पर ज़ेर दरियाफ्त था और लाहौर रेलवे स्टेशन लाहौर पर मार्च 1975 में जो बम का वाक़या हुआ था उसको भी देखा गया है, जिसकी एक स्टेज पर ट्रिब्यूनल ने ये रिमार्क दिया था कि तफ्तीश अच्छे पैराई में ना हुई है। रेलवे स्टेशन वाले केस की दरियाफ्त के सिलसिले में ये मुखबरी हुई कि अगलब गुमान है, गालब यस गालब मतलब वो क्या उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, समझ गया सर। अगमान है कि नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल भी शायद FSF की कार्रवाइयों का नतीजा है। इस शक को मजीद तकवीत इस बना पर पहुंची कि जाए वकुआ से गोली बारूद के जो खौल कब्जा में लिए गए थे उसका बोर एमुनिशन FSF के पास ज़ेर इस्तेमाल है। ये गैर मुसद्दका मुखबरी हुई कि इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन ASI और इफ्तिखार FIA इस्लामाबाद और अफसरा इंचार्ज दरियाफ्त हाय वजारत दाखिला से बात की। लाइन छोड़ गया जी। और इनके अब मैं वो जो इस प्रेशर में होना जी कि मुझे जल्दी करनी। नहीं वो वही इम्पोर्टेंट और उनके दीगर साथी इस कत्ल के जिम्मेदारी है। ये इतला डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन को दी गई, जिन्होंने डायरेक्टर जनरल साहब FIA इस्लामाबाद और अफसरान इंचार्ज दरियाफ्त हाय वजारत दाखिला से बात की, जिन्होंने बाकायदा हुक्म दिया। अब ये इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने बाकायदा हुक्म दिया कि मुकदमा हाजा जो अदम पता अरसाल हो चुका है
उसकी तफ्तीश FIA अपने हाथ में फौरी तौर पर ले ये हुक्म मुझ तक बवसातत जनाब डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन पहुंचा, जिस पर मैंने मिसल थाना इचरा से हासिल की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this Zimni. This he's writing on 24th of July 1977. हासिल की, जिसकी तरीरी इतला नोट की शक्ल में DSP इचरा को कर दी. कल इस किस्म की इतला चिट्ठी DIG साहब को दी जाएगी. अब जनाब ये तो हो गया इसका क्लेम. अब हम ये देखते हैं कि ये फाइल उस पुलिस स्टेशन से कैसे ली गई. एक इस पॉइंट में कहाँ है मलिक साहब, एक बात इसमें कि ये जो मुखबर की इतला थी, कोई इन राइटिंग कोई चीज है कि मुखबर की इतला को कहीं पे रिकॉर्ड किया हो? नहीं, वो ये प्रोटेक्टेड है एविडेंस एक्ट में कि आप पुलिस को नहीं पूछ सकते कि आपको जुर्म की इतला कहाँ से मिली. And there is a wisdom behind that. इंफॉर्मेशन नहीं होती. नहीं, वो हो नहीं सकती. सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो मुखबर ने बयान किया, उस बयान को कहीं पे राइटिंग में किसी रिकॉर्ड पर आया कि ये हुआ? यही है जो मैंने पढ़ी. मगर ये तो कुछ और कह रहे हैं कि कह रहे हैं ये इतला डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन को दी गई. इन्होंने दी ना मुखबरी की इतला. नहीं, अभी सवाल नहीं आया. हाँ. सवाल ये है कि डायरेक्टर जो थे FIA के, उनका कोई बयान है? वो गवाह भी नहीं ना उनका कुछ. वो कह सकते हैं कि मुझे मुखबर ने दी, मगर ये तो फिर मुखबर तो छोड़ें, वो तो ठीक है आपकी बात, मगर यहाँ तो उन्होंने बयान कर दिया कि ये बयान डायरेक्टर FIA ने मुझे दिया है. बिल्कुल ठीक. तो कम से कम डायरेक्टर FIA से तो पूछ लो कि भाई ये मैं I will respectfully submit, sir, this is not that important. This is not important. Okay. Important point is when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there's a related question. Yes. How did it go from police to FIA? तो ये अगला क्वेश्चन है जी. वो तो अब मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको जरा पॉइंट को क्लियर कर दूं. अब जनाब मैं again I will refer to file number 6 of the police file. Page 108. जी. अब ये भी मैं अगर इजाजत दें तो पढ़ूंगा. जी प्लीज. जनाबे अली मिल गया सर? Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. No, I have. You're only concerned with Shah Sahab. मैं इसका जवाब Please proceed. अभी नहीं दे सकता. गुजारिश है, जब भी आप जवाब दे हमें भी बता दें. ठीक है. गुजारिश है कि बहुक्म सेंट्रल गवर्नमेंट मुकदमा उन्वान वाला की तफ्तीश FIA लाहौर कर रही है और मुकदमा दाखिल दफ्तर अदम पता हो चुका है. वो तफ्तीश कर रहे हैं, मुकदमा दाखिल दफ्तर हो चुका है. बजरिया दरखास्त हाजा इस्तदा है कि मुकदमा हाजा की रिपोर्ट अदम पता लफ कागजात बसिलसिला तफ्तीश मुकदमा महावत से हासिल करने का हुक्म सादर फरमाया जाए. ये मोहम्मद बूटा इंस्पेक्टर साहब हैं. 8/7/1977 को ये लिख रहे हैं और अगर राइट साइड पे देखें वो वसूल कर रहे हैं 8/7/77. 8/8 सॉरी. इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ये है कि इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर रहे हैं 24/7 से, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं 8/8 को. इन्वेस्टिगेशन उसने लास्ट सिमनी 95 का जिक्र किया 1/10/75. बिल्कुल. वेरी राइट. अब ये बात क्लियर हो गई कि जनाब इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइल जो है वो बाद में ली गई और उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड हासिल किया जा चुका है. अगर आप उसको देखें ना, जो जिमनी पहली जो अब्दुल खालिक लिख रहा है, वो कहता है कि रिकॉर्ड थाना इचरा से हासिल किया गया है. और हासिल कब हो रहा है?
ये होगी। अब आ गया अगला क्वेश्चन कि ये री इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पुट बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मदर एंड इवन जस्टिस हलाली. There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the reinvestigation of this for his permission, or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal. Patently illegal. Number next, sir. Certainly, if there was some order for reinvestigation, obviously it would be under some provision of law, under section so and so, such and such act. This investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not wrong, 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, because this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore the fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can. Suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance, there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities. But there is no provision. ठीक है, अब समझ गए. Next point. जनाब, ठीक है सर, आगे तो चलें. मैं इस पे वो PW 41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस या कि जी उसने क्या कहा. ये वॉल्यूम है 4. अब देखना डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में दूसरे वॉल्यूम में पढ़ते नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की है. बताऊं, मैंने नहीं किया सर. क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done. 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. Volume 4, page 690. PW 41. Even sir, I'm addressing my Lord Justice Yaya. Even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी, वॉल्यूम 4 आ गई हाथ में, अब बताइए. जी सर, पेज 690. 690. ये टाइप पेज है. ये टाइप पेज, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी. अच्छा, ये एविडेंस का पेज है. 690 जनाब, यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी. मिल गया? नहीं मिली? मिल गया सर. बाकियों का भी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो. जी मिल गया. चलिए सर, वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा. जी फरमाइए. जी सर. जी
सर ये क्रॉस एग्जामिनेशन है और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं, ये भुट्टो साहब के वकील नहीं है, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन तीन मुल्ज़मान ने no, those who have been hanged, They were Co-accused. they were hanged. All three persons whose names are mentioned, kindly see. Co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate, Sufi Ghulam Mustafa, confessed, hang. Iftikhar, confessed, hang. Arshad Iqbal, confessed, hang. This is he's their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order. Hey, was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करने। Mitigating. मैं अगर इस पे आ जाऊंगा मेरा कैसा बात? I am ready for you even for a month. No, I just want to know that when you use the word confession, it was a 164 statement? It was 164 statement, and even in that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? No, they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So they did not mention. वो तो इस confession में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो relevant भी नहीं है उनके लिए। So confessed. their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions. On the direction of Sufi, this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Muhammad Abbas. Who was he? He was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF. Probably he was Inspector FSF, and he became approver. He's the second approver. सब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी। निशान वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी, वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें 693 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये पेज 692 पे हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, बट वेयर इज द ऑर्डर, वेयर इज द ऑर्डर? सच ऑर्डर इज सही है, वो अपना जो नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा। अब 693 पे आ गए, बताइए 3 में क्या है? ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं कुर्बान सादिक इकराम साहब, हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं। अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। I did not come across any written order entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि I did not come across, but such an order must be in the office of the director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज है। अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये है। अब
ये चीज, my lord, I'm clear now. Now I'm coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. So the prosecution case, in 2 minutes, I will sum up this, is that there was a... खत्म कर दें, एक सिर्फ बात. In the meanwhile, any private complaint was also filed? Yes, sir, sir, sir. But I will deal that. I will deal that. अच्छा, you will come there. वो बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा अच्छा, ठीक. बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी. आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना, फिर बड़ा समराइज कीजिए. 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा. अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज में ये करता हूँ. We have to keep you entertained in your retirement, Manzoor Malik sahab. I feel, sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this this job. बड़े लायक आदमी माशाल्लाह सजाद हसन साहब बैठे हैं, अजहर वानी साहब बैठे हैं. मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर. मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट said छोड़ो जी. Magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी defense side पे थे. तो prosecution ने जब भी उन्हें embarrass करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये judgment दिखा देते. And I remember the situation 25 years back. तो ये आपकी ड्यूटी है. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा. मैं आपको बातें बता दूंगा, उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे खत्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो it will be more shocking. तो अब prosecution case ये है कि there was a conspiracy sometimes before 74 between late Zulfikar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of... The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है charge में तो है, सदा में भी है, charge में भी, FIR में नहीं. अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दे तो. जी. अब वो ये था कि जी there was a conspiracy between late Zulfikar, उसका टाइम नहीं दिया गया, but obviously that was after the creation of FSF and before Masood Mahmood became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfikar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Kasuri Saab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas. Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Mia Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Sten gun and other weapon, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These two persons, along with Ghulam Hussain, they were present at the spot. This is prosecution story. And Ghulam Hussain was watching the whole operation. He was controlling the whole operation. And these two young men in their early 20s, they fired at the car. One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is? Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? Arshad. Iftikhar, एक हो गया, Arshad. दूसरा अरशद है. Arshad. तीसरा गुलाम हुसैन. गुलाम हुसैन. अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट इंटरम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुल्ज़म थे. वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुल्ज़म थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्ज़म थे और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे मुल्ज़म थे. फिर
Masood Mahmood became approver. His statement, first, his confessional statement was recorded, where he confessed this, that I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under Section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number one. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon. Then they appeared before the court as the witnesses. Those remaining three, they remained stick to their confession. Pardon was granted by the provincial government or the federal government? No, sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so your lordship is asking some question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवल भी था, इसी तरह गुलाम हुसैन का भी 164 का था। बिल्कुल था। उसका भी था। पहले तो वो मुल्ज़म बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुल्ज़म बने। पहले इंटरम चालान में वो मुल्ज़म इसीलिए बने ना कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवर बन गए, स्टेटस चेंज हो गया। अब ये था प्रोसिक्यूशन केस। इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुल्ज़म थे उनको भी सजाए मौत, और जो एक्ट्रेस के थे उनको भी सजाए मौत। 5 persons were hanged for 1 injury. 5 persons. जिस शख्स को जिसको कत्ल किया गया, इंटेंशन उसको कत्ल करने का नहीं था। सर ये तो ला है ना कि अगर इंटेंशन ए को करने का है और बी हो गया तो वो वही समझा जाएगा कि ए ही हुआ है। वो बहुत क्लियर है। 301 अब चले सर, आगे चले जी। Whenever you are tired, let us know. We can No, take sir, a no, break. I am not. I will just ask for a break for the prayer. Whenever you want, we'll break. No, sir. Prayer? और 2 बजे? हाँ, 2 बजे। 2 बजे करते हैं। Sir, Chalan, this, now I'm talking of incomplete Chalan, as your lordship has said. I will show you the incomplete Chalan. It was prepared on before that, no transfer. And if your lordship permit me, may I deal with the transfer of this case? No, I think Chalan ke baad hi hua. Incomplete Chalan was prepared on 11th of September, 1977. 11th of September, this reinvestigation started in July, and on 11th of September, incomplete Chalan was prepared. And sir, it was submitted in the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. Interim Chalan is at page 282 of volume 7. Volume 7 जनाब देखें। Page 282। देखना में ठीक है सर, वो आप देख लें कि ये इसमें 7 एक्यूज है ना। देखिए 7 मुल्ज़म है, बाद में कंप्लीट आया तो 5 रह गए। हाँ, वो अगली बात है। बस ये सबमिट हो गया सर। अब ये सबमिट हो रहा है 12th of September 1977, and now the order is at page 3 to 4 of the same volume. Of the same volume. ये जरूरी है जी। ये जरा पढ़ लें। ये जरूर सर, ये बड़ा जरूरी है। कौन सा पेज? सर पेज 3 to 4 volume 7 जी। 2 to 4 जी पढ़िए। ये सर सरकार बनाम, ये उर्दू में है जी, बनाम जुल्फकार अली भुट्टो वगैरह, विद इन ब्रैकेट लिखा है 7 कस। ये 7 लोगों के खिलाफ चला। जेर दफा 302, 307, 120B, 109 ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान। नामुकम्मल चलान मुकदमा हाजा आज अदालत पेश हुआ। मुल्ज़मान जुडिशल हवालात में हैं।
चालान बाद पड़ताल दर्ज रजिस्टर होकर बदालत जनाब सेशन जज लाहौर भिजवाया जाता है बराए मजीद कार्रवाई, क्योंकि जुर्म ज़ेरे दफा पे की समात की मुजाज सिर्फ अदालत सेशन है. नो सर, दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेरी. सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एनीथिंग, दे विल सेंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन. इसमें क्या खास बात है? खास मैं ये कर रहा हूँ कि ये 12 तारीख को उसने भेज दिया सेशन कोर्ट को. फिर सर मैं आगे चलता हूँ. अच्छा 190 और रिसीव भी हो गया सेशन. जी, रिसीव भी सेम डेट पे होगा. उसी डेट को ये सेशन कोर्ट को रिसीव होगा, उसी पेज पे, उसी पे. ठीक है सर कुछ नहीं होता, अगर इजाजत दे. जी, मैं जरा आपको थोड़ा सा पुश भी कर रहा हूँ. नहीं, पुश अच्छा ठीक जी. बड़ा जरूरी है. 12 तारीख को ये चालान सेशन कोर्ट चला गया. अब दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लर्नड सेशन जज व्हिच आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स. Received today. PP to check and report by 14th of instant. अब पीपी से Public prosecutor? Public prosecutor. ये वो जज साहब थे. Then he was judge of this honorable court as well. He was at that time and he is alive. कौन सेशन जज? ये सेशन जज. कौन? एजाज निसार साहब हमारे. अच्छा. एजाज निसार साहब सेशन जज लाहौर थे. आज भी माशाल्लाह जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे. ये उनका ऑर्डर है. अब उसी दिन अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद उनने कोई ऑर्डर किया इसने सेशन जज साहब? अब वो मौका ही नहीं मिला. वो क्या, उन्होंने तो एक ऑर्डर किया ना जी. उन्होंने पीपी को भेज दिया. उन्होंने पीपी से कहा कि आप रिपोर्ट करें एग्जामिन करके. ठीक. इट्स नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. ठीक है. So PP has nothing to do with that. That is So he did not exercise his judicial mind on nothing. And PP submitted report of what's happened next. That is more important. पीपी से सिर्फ असिस्टेंस मांग रहे थे. वो बहरहाल उनको समझा के चलें, कुछ बता दें क्या. बट मुझे नहीं पता, मैं कमेंट नहीं फर्दर करता इस पे. अब उसी दिन, अब ये यहाँ इम्पोर्टेंट बात आ रही है. उसी दिन 12 तारीख है और नेक्स्ट डे पे ये केस हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाता है. इस तरह होता है. ये दिखाएं, ये रिकॉर्ड से दिखाएं. एक सेकंड सर, एक सेकंड. अब मैं जनाब, योर लॉर्डशिप इज हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर मी, बट आई एम I think you are breaking all the ratings of all the TV channels today. क्यों सर? Sensational. Suspense. वो बात ही You ऐसी है. created suspense. नहीं, not suspense sir. जी. Your lordship, We are waiting for the next thing you say. जी. Volume 7, page 1 sir. Volume 7, Page 1. same volume. Same volume. And I will write to read the caption of this application, the title we call, The State versus Mr. Z.A. Bhutto, etc. So it's very important. Yesterday, some lawyer told that said perhaps the application was filed by Kasuri Saab. This application has been filed by the state, etc. Order hai 13/9/1977. In my whole career, sir, as a lawyer, as a judge, I have not seen such a brief order. Which order is it? This one, this just few lines order. जरा पढ़ लें इसको. मैं पढ़ता हूँ. अब देखिए, मिस्टर अनवर, मैसेज अनवर, M.A. रहमान, Ijaz Hussain Batalvi and Farouk Bedar advocate, all for the prosecution. In view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. In view of the submissions, what are those submissions? Nobody knows. Where is the petition? No, it is not on the record. Any notice to the other side? No, no. ये तो अगली बात है जी. पहले तो इसको हजम करें ना जनाब कि ये हुआ क्या है. ये बड़ी पेनफुल आप सिचुएशन. इतने मुरगन गिज़ा ना खिलाए क्या मज़म ना करें? नहीं आप करेंगे. मैं कहता हूँ ये तो सर बड़ी बातें हैं ना जी. अभी तो और बातें इतनी ज्यादा आएंगी तो बहुत मुश्किल हो इसी जाएगा. मौके पे जरा वो प्रोविजन भी बता दीजिए. 26 उसको भी हम पढ़ लेते हैं. सर वो बाद में पढ़ेंगे. पहले मैं एक और बात बता दूं, वो मैंने पढ़नी है. उसके साथ तो बहुत बड़ी बहस है इस इशू पे. मलिक साहब, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है 127T, ट्रांसफर एप्लीकेशन. ये ट्रांसफर सर टी फॉर और एप्लीकेशन नहीं है. नहीं, एप्लीकेशन है ना जी. एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है. नहीं, कोर्ट पे नहीं है. होगी
नंबर लगा हुआ है। जरा इसमें इस पेज पे सफा नंबर 2 पे 2 नंबर हैं, एक है क्रिमिनल ओरिजिनल 60-77। सर वो ये नहीं है, वो अब ऑर्डर आ गए हैं ट्रायल कोर्ट के, जो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई है ना, ये ऑर्डर उसके हैं। ये ट्रांसफर एप्लीकेशन से सिर्फ यही रिलेट करता है, वो उसके नहीं है। ये बेसिकली जो स्टाफ ऑफिस है ना आपका, उसने एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब कौन है? मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब। ये सर ये अगला है, इसको कंफ्यूज ना करें इसके साथ, ये अगली बात है। इस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे यही ऑर्डर है। नहीं, ट्रांसफर एप्लीकेशन को नंबर तो लगा हुआ है 127T, बिल्कुल लगा है ना जी, उसी का ऑर्डर है ना, लेकिन वो कॉपी कहीं नहीं है। वो कॉपी है ही नहीं। और अगली बात मैं बताता हूँ ना जी, एक तो ये आपने नोट कर लिया कि द स्टेट हैज मेड जुल्फकार अली भुट्टो एंड अदर एज रिस्पोंडेंट, दे वर रिस्पोंडेंट, बट नो नोटिस, no notice. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th when the challan was submitted. Before that, it could not be filed. Malik sir, this order was Sorry, pending this before, point. Sorry. before any higher forum. Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for Naik Saab whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfikar Ali Bhutto before the High Court wherein this issue was raised. And that order is very interesting, which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed. Undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice. No notice. In spite of the fact that they were respondent and the state was conscious, prosecution was conscious that they people are relevant. So they The were, responsibility of the court. yes, of course it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th, this application could not be filed because under section 526, only a case pending before the court can be transferred. ये पॉसिबल है तेरा कोई फाइल हुई हो जब और ये बिल्कुल मुझे नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो जरा सेफ साइड पे रहा हूँ। तो ये कहाँ पे पेंडिंग था जो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया? ये मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग था ना जी, मैजिस्ट्रेट से चला गया सेक्शन जज के पास उसी दिन। 12 को चालान सबमिट हुआ, 12 को मैजिस्ट्रेट ने 190 सबसेक्शन 2 उसके तहत उसने सेशन जज को भेजा और उस सेशन जज ने उस पे एक ऑर्डर किया, अपने पीपी से कहा कि रिपोर्ट दो। अभी वो रिपोर्ट आई या नहीं आई, वो रिपोर्ट वैसे पड़ी है फाइल पे, मगर वो पिटीशन होगी हाई कोर्ट को। माय लॉर्ड हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि दिस माइट हैव बीन फाइल्ड ऑन 13th, बट एट द मोस्ट if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September, nothing was pending in any court. And then I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court. You cannot transfer investigation to the court. So, no notice. आप कहते हैं कि सेशन जज ने कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया, केस उनके पास नहीं था। नहीं, उनके पास तो था, चला गया ना जी, कॉग्निजेंस की कंडीशन नहीं है, वो मकसद ये फ्रॉम ए कोर्ट ऑब्वियसली। और आगे वो भी मलिक साहब ये जो है कि इट शैल बी हर्ड बाय द फुल बेंच। अब ये तो जनाब आप देखेंगे कि क्या ये सुमोटो ट्रांसफर है। No, sir, please. This is not suo motu. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, But sir, then we can only assume it's sumoto. no, because number is there. So if we are fairness, since I am here to assist this court, I will But not say. who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, prosecution. See, why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? नहीं, वो Why नाम not नहीं है the ना जी। accused? Why not anybody else? नहीं, सर पे ऊपर पड़े ना, the state versus so and so.
या पढ़ा नहीं इसका टाइटल? But it may be because every criminal case is the state. Yes, yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner is. No, sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case, it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc., etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo moto, maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to the accused and the complainant. Sir, Maybe the complainant didn't want to पे आऊंगा कि उसका जवाब जो दिया है ना हाई कोर्ट ने, अब मैं इतने पेन में आ गया उसको पढ़ के कि जब उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, they admitted. Yes. वो मैं any application is available on record? सर no application. पता नहीं अब बाकी लोगों की क्या राय है. नहीं, अगर आप ये बात अभी भी कर दें, ये जो आपने कहा जो हाई कोर्ट में जो सर मैं करूंगा, मगर मुझे जरा चलने दें, मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी we appreciate that. मैं चाहता हूं कि मैं आगे उस वक्त चलूं जब आप तमाम लोग जो हैं वो क्लैरिटी में आ जाएं कि जो मैं कह रहा हूं मैं कह सका हूं और मैं समझा भी सका हूं. अब मैं क्योंकि डिफरेंट है ना जी, मैं जल्दी नहीं समझता, जनाब बहुत क्विक हैं, आप जल्दी समझते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ वाले भी होंगे. अच्छा, थोड़ा सा आपको ये अंदाजा होगा मलिक साहब, थोड़ा सा अंदाजा जब आप यहाँ थे और वहाँ वकील की क्या हालत होती होगी. अच्छा, आपका अंदाजा? नहीं, कोई वैसी बात नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल सर, वेरी कंफर्टेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है. मैं तो हूँ, आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. चार्ज का नहीं. No, I think सर ये चार्ज तो अगली स्टेज आनी है ना, अभी तो चार्ज कहाँ से आ गया, अभी तो केस आया है. वो जो आपने ट्रांसफर के बाद जो डेट पड़ी है हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के लिए रखा है. सर वो मैं आऊंगा ना जी, उस पे मैं आऊंगा. चलें. Let us not. नहीं करें सर, कोई बात. अच्छा, अब ये मैं सबमिशन ये करूंगा कि इससे पहले कि मैं इस पे अपनी सबमिशंस करूं इस पॉइंट पे कि क्या हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या नहीं हो सकता, वो भुट्टो साहब की जो एप्लीकेशन कौन से पेज पे है, ये फर्स्ट कोई रेफर कर लेना बेटा, वॉल्यूम 10 है सर, वॉल्यूम 10. ये मौलवी मुश्ताक साहब क्या सेशन जज से एलिवेट हुए थे या लॉयर से? नहीं सर, lawyer थे, and he was elevated in 1960. He was acting. Who was the chief justice? सर वो मार्शल लॉ के बाद एक्टिंग का उन्होंने ओथ लिया पहले, फिर उन्होंने परमानेंट का भी लिया, वो भी मैं अगर इजाजत. कौन सी वॉल्यूम? ये अभी मैं रेफर कर रहा हूँ वॉल्यूम 10 को. वॉल्यूम 10 सर. वॉल्यूम किशमिश पेज कौन सा, ये पिटीशन है नहीं, पेज कौन सा है? अच्छा, पेज 19 पिटीशन का. अच्छा, पेज 19 सर, वॉल्यूम 10 सर, 19 सर. अब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं, आपने कहा कि यही बता दें, उन्होंने क्या इसका ऑर्डर लिखा है, मैं इसलिए इसको सर, पेज 19 वॉल्यूम 10. मिल गया सर? मिल गया, मिल रहा है जी. बाकी सब सर्विस पूरी तरह नहीं है सब जगह. On behalf of जी सर, ये एप्लीकेशन है क्रिमिनल ओरिजिनल के ऊपर है, नंबर मिसलेनियस नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस है 933 M of 1977. Sir, this was filed on 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge. So this is in re the state versus the complainant, Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है. पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3
Page 2 is petition ka. जी पढ़िए. Page 2, ground 3, the apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above captioned case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete challan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ground ली है. अब ये acting chief अगला है 4 that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint. अब वो जिक्र आ गया जनाब का. My Lord Justice Tariq Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial. It is submitted that on that date, even complete challan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the challan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. तो से ये इतराज जो पूछ रहे थे जनाब पिछली डेटों पे ये इतराज हुआ और इसका ऑर्डर भी हुआ. अब वो ऑर्डर देख लेते हैं. मिला है नहीं मिल रहा कहाँ से हैं? पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है. अच्छा सर ये आपका अब पार्ट 9 है वॉल्यूम की बजाय. किसी जगह पे ये पार्ट है किसी जगह पे वॉल्यूम है जी. ये मिल गया है सबको जी. मिल गया जी सर. पेज इसका 35 है. यहाँ से ये ऑर्डर शुरू हो रहा है जी. ये इसका ऑर्डर तो बड़ा लंबा है. मैं इसको स्किप करूंगा. 55 पे कौन सा है? 40. अच्छा जनाब इससे पहले जरा मैं पैरा पढ़ दूं. पैरा 14 जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम सब ने पीसीयू का ओथ उठाया है. सुप्रीम कोर्ट से भी पीसीयू का ओथ उठाया है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसी ऑर्डर का. हाँ इसी ऑर्डर में लिखा है एट पेज 43 सर. पेज 43 पैरा 14 वॉल्यूम. बिफोर यू कम टू इट ये अगर आप टाइटल देखिए पेज 35 पे इसमें 2 एप्लीकेशंस का 2 है. दूसरी भी है. दूसरी कौन सी है? 933 तो वो वाली है. 933 में उन्होंने वो तो रिक्यूजल वाली है. हाँ वो कोई. और दूसरी वाली कौन सी है? ये एक तो ये है ना जिसमें उन्होंने इनका प्रेजुडिस और बायस. दूसरी कौन? दूसरी में क्या इशू था? वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट को वो नहीं कंट्रोल कर सकता. दिस शुड बी परमानेंट चीफ जस्टिस. मगर वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं. ये इस रेफरेंस से ये ट्रांसफर के मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ. मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. जी पढ़िए. पेज बताइए. जी पेज 43 सर. पार्ट मिलॉट पार्ट 9 वो एक से जरा आ रहा है. पार्ट आ रहा है. बड़ा स्कैटर्ड हुआ है सर. कोई उधर ऑर्डर है कोई जब तक पढ़ते हैं वो बाकी जनाब जी नहीं वो आप पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे. ना भी आए ये सबके पास है. जी जी प्लीज स्टार्ट. सबके पास नहीं पढ़ते तो हम सुनते रहते हैं ना जब तक आ जाएगी. I have no objection sir. आप सही पढ़ेंगे. I will obey every command of नहीं जी प्लीज sir. The next challenge is to the oath subscribed to by the acting chief justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting chief justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court judge's oath of office, Order 1977, within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered
administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PC. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं कोर्ट ही कोई ना बड़ी बात है वैसे बहरहाल एनीवेज अब दूसरा दिखाओ दूसरा पेज 55 नहीं मगर मेरिट्स पे बताएं मैं उसी पे आ रहा हूँ सर ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है इट्स अ गुड हिस्ट्री लेसन बहुत अच्छा इफ नथिंग एल्स मलिक साहब ये बता दें कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की और किस केस में इसी में ट्रांसफर में सर 526 अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन वो मैं उसको पढ़ूंगा साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं ना हम अपील फाइल करते हैं somebody is convicted so that is ABC versus state नहीं वो लिखे ना लिखे इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है वो कोई इतना सीरियस बात नहीं अब मैं 35 दो अब आप मेरिट वाली बात बताएं वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं चलना मेरिट पे अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी जो सर पेज 55 सर पार्ट 9 के 31 जी पार्ट है जी 9 जी 55 पेज पे जी 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी एक कंप्लेंट एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused person under section 120B 119 skip this हाँ जी सर ये बड़ा जरूरी है सर ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैंने तो पढ़ लिया जी कुछ खास बातें तो बताएं सर अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूं तो फिर बता दूं तो ज्यादा सुन ले सर कुछ नहीं होता सर बड़ा जरूरी है आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also ये बस नहीं हो जाएगा सर देखिए वो उससे बेहतर है कि वो अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूंगा कि अगर जल्दी में कुछ चीज रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है जैसे तो आप इसको सुन लें मैं तैयार हूँ आप रात 12 बजे तक मुझे रखें मैं तैयार हूँ अच्छा मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ मुझे कोई इशू नहीं एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन में स्किप कर देता हूँ was filed before a magistrate at Lahore by Mr. Iftikhar Ahmed Tari the complainant against the appellant so and so अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है ये कौन आ गया ये कुछ दूसरे थे जी ये बेटा ये है The complaint of Ahmad Raza Kasuri para 32 करना क्या चाहते हैं जी was referred to a division bench consisting of Mr. K.M. Samdani J and Mazrul Haq J. अब यहाँ मैं पॉज करूँगा और मैं सबमिट करूँगा कि why notice was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is it. अब इसको आप क्या कहेंगे bias कहेंगे tact कहेंगे cleverness कहेंगे आप क्या कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा अब आप इसको हम नहीं कुछ कहते हैं आप so मैं कहता हूँ this is a clever move जी सर ठीक है
ये क्लेवर चीज है ना जी, ये बायस से आगे बात है। बायस तो एक चीज है ना कि आपका एक एक्ट है कुछ स्किप कर गए, ये तो आप किस तरह कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है। वायलेशन भी नहीं है, वायलेशन तो बड़ी चीजें होती हैं कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे नहीं मिली, मुझे ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये वायलेशन नहीं है कि एक अजीब सी बात। रूट ऑफ अ फेयर ट्रायल। हाँ बिल्कुल, ये आपने एक क्लेवर लिया, बिकॉज आई कैन नाउ रीड द माइंड ऑफ द जज एज वेल, कि वो अगर नोटिस किया गया, सो ऑब्वियसली द अक्यूज साइड विल आर्ग्यू कि सर द प्राइवेट कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर ए 2-member bench, refer this 2-member bench. And in that 2-member bench, one has already allowed bail to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. वो कंप्लेंट क्यों 2-member bench के पास आप पता है जी वो उस वक्त चली गई होगी, पता नहीं चला होगा, यहाँ कोई बात अभी तक सही नहीं हुई होगी, मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करता, मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट है। उसमें एक जज ने बेल दे दी ना। नहीं, ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाती, वहीं थी ना जी पेंडिंग। नहीं ये तो हाई कोर्ट के सर वो ट्रांसफर होगी ना। नो, अभी ट्रांसफर नहीं हुई। नहीं सर हो गई है। आप ऐसा करिए कि 56 पेज के ऊपर से चौथी लाइन पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा कि वो कंप्लेंट जो अहमद कसूरी इन्होंने दायर की थी वो कहाँ गई। ये पढ़े, सिमिलरली एक कंप्लेंट, हाँ वही है। हाँ ये पढ़े यहाँ से। हाँ मैं सर वो जल्दी में आता हूँ ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कंप्लेंट के अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने, मैंने सारा पढ़ना था, मुझे डायरेक्शन आ जाती है। हाँ पढ़े। सिमिलरली ये सर चौथी लाइन पैरा 56 से, सिमिलरली a complaint case filed by Ahmad Raza Kasuri in regard to the murder of his father Nawab Muhammad Ahmad Khan was transferred this court by order dated 15th of August 1977। पहले ही हो गई थी ये पहले, ये तो मैं कह रहा हूँ पहले ट्रांसफर हो चुकी है ना। इसीलिए जो मैंने जो आर्गुमेंट जनाब को दिया कि मूव क्या थी, करना क्या था, क्योंकि उस 2-member bench में से one honorable judge Justice Samdani allowed bail to Zulfikar Ali Bhutto in the state case। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहला उनका मूव ये था कि हम ये कंप्लेंट आए मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट आ जाए, आ गई। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको बेल मिल गई, जब बेल मिल गई दे सेड ओके लेट्स ट्राई अनदर थिंग, उनने फिर एक और मूव किया और उनने जो मेन केस था उसको ट्रांसफर किया नोटिस के बगैर। ठीक समझ आ गई ना जी बात, वेरी क्लियर। और ये भी बता दें क्या क्या मैजिस्ट्रेट से वहाँ हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकता था, ये भी आपने अब ये हो बिल्कुल हो सकता है सर। अब उसमें लेकिन एक बात और क्लियर भी हो गई ना जी सर, कि एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के नोटिस में था कि एक कंप्लेंट यहाँ पड़ी है और नूरलाई केस के तहत उसको साथ चलना चाहिए। नहीं मगर सर वो तो देखे ना, अब मैजिस्ट्रेट तो ये ऑर्डर नहीं कर सकता ना कि इसको ट्रांसफर कर दें हाई कोर्ट के पास। नहीं हाई कोर्ट के पास है ना जी, मगर वो दूसरा चालान जब आया मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास तो ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो तो अंडर द लॉ ही कैन नॉट लुक एट दिस कंप्लेंट। अब माय लॉर्ड जस्टिस या हैज वेरी एप्टली समराइज्ड द सिचुएशन, यस, एंड आई थिंक ही इज fully understood कि what was the move, though it was clever move। what was the intention? Now since your lordship is looking for malice, yes, for touching the merits of the case, so step by step your lordship will feel that malice is not clear but it is floating on the surface of the record in every respect। ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस। कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं, वो हो गई अगस्त में ट्रांसफर हो गई। उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई जी, कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी उन्होंने, तो अभी कुछ भी नहीं किया, मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है, इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स है। ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेप में तो मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाई कोर्ट जाना था स्टेप। हाँ जी, तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है क्योंकि फिर आगे कहानी होगी। वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली,
वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा, वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है, जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड पे। अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे असिस्ट कर रहा हूँ कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक स्टेप जरूरी है, एक एक स्टेप जरूरी है। अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि इस चीजों को देखा जाए। सर अब मैं पढ़ूं सर। By the order of so and so, another complaint Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfikar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। The complaint of Ahmad Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया. The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया. The same day to the Court of Session, the state filed an application for transfer of this case to the original side of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी. अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहां पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा. There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused. In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. अब ये मुल्ज़म को भी ये एडवाइस दी जा रही है कि 5 जजों पे इत्मीनान ज्यादा करो. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, वो पढ़ देना. हाँ ये सर, अब मैं सर बाकी अभी स्किप कर रहा हूँ. पेज 63 जिसमें ये ट्रांसफर के बारे में बात आ रही है. पेज 63 सर, पैरा 42. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा पेनफुल है, बड़ा पेनफुल है पर्सनली फॉर मी सर. एंड अदर ग्राउंड इज that the order of transfer has been passed without notice to the accused. Such notice was required in the present case. अब आप ये बता, मैं नहीं, I can't comprehend sir कि 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice was judge for the last 15 years. They are writing no notice was required. और इससे पेनफुल बात अगली है. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. अब जनाब यहाँ पे मैं जरा 526 का 6 पढ़ दूंगा ताकि जनाब को पता चले फिर कि क्या हुआ. जनाब आप वो जो कर रहे हैं ना कि मूव, क्या मूव है, अब यहाँ से क्लियर होती है. ये जनाब 526 subsection 6 है. पढ़ू सर जी. Notice to public prosecutor of application under this section.
every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें अब इसको जनाब क्या कहेंगे? Ignorance. If it is ignorance. Ignorance of all the 5 judges. नो नहीं, क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. एप्लीकेशन अगर जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट बदयांती क्या होगी? What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for yes, वो कहते हैं जरूरत नहीं है. क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा. वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस. मलिक साहब ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ है? वो 526 में दिए गए 1 2 3 4 5. सर मैं आऊंगा, तो उनका तो तस्करा है ही मैं नहीं. आऊंगा. मैं तो आपको देखे, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है. ये स्टेप बाय स्टेप. Whether for this presidential reference or Yes, not, sir. but good history lesson. Yes, sir. बिल्कुल And है. for students of law, बिल्कुल है. मैं कहता as हूँ well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिया. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए. अब इसकी वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था. नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे, केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन. Yes. आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है. अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए. अब मैं आ गया जी, आगे बढ़े सर. आगे पॉइंट. हाँ, सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? तो फिर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है. वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई. वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है. नहीं इस पे आ रही है ना जी. ये 2 मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है. की जानिब से नहीं सर नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. नहीं, मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ. वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए 1 सेकंड के लिए. एक नंबर पेज पे जी, वो 1 नंबर पे जी आप फरमाइए. ट्रांसफर ऑर्डर 9 वाला. जी फरमाइए सर. मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए. is transferred to this court. Yes. जरा से मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ. Is transferred to this court for trial. Now the same bench is hearing that it has been wrongly transferred. एक ही पॉइंट है, वो जो एप्लीकेशन में जो थ्रस्ट ऑफ द मैटर है ऑन द प्रेजुडिस और बायस ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो ऑर्डर हो चुका है.
सर इसी तो फिर ये वो इतना लंबा अब वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अब वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अनलेस आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% ठीक है आप। हुआ ये कि टेंटेटिव ऑर्डर नहीं है ये, देखें सब्जेक्ट टू नोटिस लिखा है, इज ट्रांसफर टू द स्क्वायर फुट ट्रायल, full stop, खत्म हो गई। नहीं, that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 पे देखें ना। सर नहीं, वो दूसरा देखिए मंजूर मलिक साहब, go back to page 2. Page 35 says so. नहीं सर नहीं, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by volume. ये तो conclusive order आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सर मैं आज करता हूँ। Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. He's saying that. From where you are reading, sir? Sir, page 35. Volume? Part 9. जरा देखिए ना, उन्हीं एप्लीकेशंस पे फिर ऑर्डर आ रहा है ना। नहीं, ये वो एप्लीकेशन नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है 127T of which have already been dismissed by a short order. वो तो और है, यही सीएम है ना, पहले डिसमिस यही सीएम है, नीचे इनका शॉर्ट ऑर्डर के नीचे ऑर्डर। साहब मैं शायद अपनी वजाहत नहीं कर सका, मैं अगर आपको पेज नंबर 2 पे हम जाएं वापस, जो है in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. Full stop. Concluded matter. Now, in the subsequent order, they're justifying this order. वो इसलिए justify कर रहे हैं, मैं which was strange. सर वो इसलिए कर रहे हैं कि जो accused की तरफ से ये जो मिसलिनियस एप्लीकेशन लिखी है ये भुट्टो साहब ने दी है, ये डिफरेंट है, उसको भी कवर कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? उसको डिसमिस किया हम दोनों एप्लीकेशन को शॉर्ट ऑर्डर। मेरा मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग, इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन अपील, इट शुड हैव बीन बिफोर सम अदर बेंच। फिर ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फिर उसको रीजनिंग दे रहे हैं। सर वो इसलिए कर रहे हैं ना कि भुट्टो साहब prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias, this was one of the ground of bias. Against one judge. One judge was obviously, sir. अगर उन्होंने उसको जस्टिफाई करने में बहुत सी चीजें कर दी। सर वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो तो फिर जब ये कि आप चीफ जस्टिस को करेंगे तो बाकी तो शामिल हो ही जाएंगे ना, वो तो सारे शामिल हो जाएंगे उसमें। वो मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं इधर? ये तो मुहावरा है जी, जो समझना चाहे मुझे। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसने मुहावरा हमारी अदालत बड़ी डेमोक्रेटिक है, हर जज अपने डिसेंट भी करते हैं, आप नोट कर रहे होंगे। ये तो बड़ा हेल्दी साइन है ना जी, डिसेंट करना का मतलब है कि यू आर अलाइव। आप एक जो जिंदा है वो ही डिसेंड करेगा ना, जो डिसेंड करते वो हाथी के पाँव से निकल जाता है, जो डिसेंड करते वो हाथी के पाँव से निकल जाता है। अब आप मैं नहीं, चले we make some progress. लिबर्टी नहीं लेना चाहता। अच्छा सर, would you like to take a break at this point? कर ले जी, कर ले। नहीं, क्योंकि आप काफी देर से खड़े हुए हैं। सर मेरे नहीं हमें है फिक्र। कोई कर लेते सर, आप मेरा ख्याल है इस पॉइंट को खत्म कर लें, ये जो ट्रांसफर वाला, चले ये खत्म, इसको खत्म, चले बिल्कुल ठीक है, खत्म कर, बिल्कुल ठीक। आई एम विद यू सर, आई एम विद यू। ये खत्म कर लें। नो सर, नाउ आई विल लाइक टू रीड सेक्शन 526. This is the point. I hope I am clear on the change of investigation, reinvestigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now, sir, as your lordship has rightly observed, that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party. Such order is expedient in the end of justice. आपने पहला वाला छोड़ दिया। वो भी सब कर ले, उसको भी शामिल कर ले। मैं जिस पॉइंट पे जल्दी fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. ये बिल्कुल ठीक है सर, वो आप काफी चीजें उसमें। अगर ये लिखना तो चाहिए जजेस को। सर मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए नहीं, ये तो
This is the mockery of law if you pass an order just by saying, in view of the submission made in the application, it is transferred. And that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice. And in a case where death sentence is provided. So, but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is a judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा subsection 2 ये बड़ा important है सर बड़ा important है when the High Court withdraws for trial before itself any case from any court it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important. Your Lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the Court of Session, from the Court of Session to another Court of Session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. Court of Session का procedure. Session या magistrate का. अगर आपने magistrate से किया है, so you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, Your Lordship, to section 374. Kindly see. What is 374? यही जो है कि confirm कौन करेगा death penalty. नहीं सर मैं अभी आता हूँ बड़ा it is a novel point. High Court 5-member bench उसको death penalty दे रही है तो confirmation क्या Supreme Court 374 376. सर मैं सर इजाजत दें मुझे. Section 374 Code of Criminal Procedure. इसका caption है sir. Sentence of death to be submitted by the Court of Session. When the Court of Session passes sentence of death, the proceeding shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया वो क्या करेगी High Court? अब now this provision is part of procedure of Court of Session. Your Lordship has gone through many judgments. Every judgment of a session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. Firstly, yes, sir. Are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. A second, let me just finish. One interpretation could be because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right. Very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think, only three scenarios. Very precisely. What is your answer? मेरे दोनों ही है. एक question यहाँ पर क्योंकि इसको correct करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. Same ठीक है जी. Withdrawal transfer is something else. नहीं सर नहीं एक वो पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड करने पहले देखिए ना विड्रॉल है एक मामला एक कोर्ट में पेंडिंग है आपने अपने पास ले लिया वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव वो एक ही चीज है विड्रॉल और ट्रांसफर मतलब ये है कि हाई कोर्ट में जाग चला गया ना जी अब ये अग्रीड के प्रोसीजर ख्याल में अब ये 14 सिनारियो वो लार्जर बेंच का है आप हमें ये जरा मैं जरा यू आर गेटिंग डिट्रैक्टेड
जी सर आप क्या फरमाएं? Procedure of यस प्रोसीजर तो वही रहेगा ना session trial. मैं यही कह रहा हूँ ना कि section 374 is part of the procedure and then there is a very good judgment on importance of this section authored by my lord Mr. Justice Manzoor Shah. Thank you, sir. I'm just reading that. You're only concerned today with Shah Sahib. This is PLD 2021. नहीं पहले ये आप हमें बताएं ना. क्या सर ये सुनने में बताता हूँ वो बात आपकी बात मैंने नोट कर ली है मैं उसका जवाब देता हूँ मगर ये थोड़ा सा जो PLD सर 2021 सुप्रीम कोर्ट 600 यही है अब इसका पैरा 6 है जी फिर 7, 8 they are relevant. आपका जजमेंट है नहीं मेरा नहीं शाह साहब का आप शाह साहब इज द ऑथर जज है आप सिग्नेटरी थे इसमें हाँ ये बात ये सही है बट आई डिड नॉट ऑथर which paragraph सर पैरा 6 है अगर कहते मैं पढ़ देता हूँ नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा नहीं सिर्फ बता दें क्या point पैरा 6 है ये इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूटी है ये और ये ड्यूटी उससे बड़ी है अपील जो है वो राइट है this is the duty and from my personal experience as a judge of the High Court sir I decided 2 murder references where there was no appeal no kindly look at the wisdom there was no appeal 2 cases I decided as the judge of the High Court with perhaps my lord Justice Tarak was with me or somebody else I don't remember but in both these cases both the accused were acquitted both the accused. So this is the duty, that is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, that sentence cannot be executed unless references. There is no bar if no appeal has been filed. अपील के लिए नहीं है ये रेफरेंस के लिए नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि फर्स्ट इंटरप्रिटेशन my interpretation that if we read these 2 provisions together so I will submit that this a case where death sentence is provided cannot be transferred to the High Court because of 374 because otherwise it will become redundant अगर उसको provision तो apply नहीं हो गया ना वो कौन सी सर हाँ वो भी है वो भी पॉसिबल सर आप 5 मेंबर बेंच सुन रहा है तो उसका 10 मेंबर बेंच 9 मेंबर के पास दाखिल हो जाता है ये एक related question in Pakistan's judicial history has a murder trial ever been conducted by the High Court बिल्कुल सर इसमें murder trial मैं यही अर्ज करने लगा उसकी जो हमने रिसर्च किया मैंने नहीं की क्रेडिट गोज टू these 2 young barristers इंडियन jurisdiction में एक भी केस नहीं है ठीक है हाँ छोड़ो इंडियन jurisdiction में नहीं है एक भी केस नहीं है सिंस 47 till 1970 हमने 77 तक देखा ताकि वो पीरियड रहा पाकिस्तान में 2 केसेस हैं दो एक केस है कराची का दैट वाज अगेंस्ट गोहर अयूब son of former President Ayub. Some private complaint was filed. I think that was in connection with the election of 64. Karachi incident था कोई उसके complainant ने फाइल की कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो गौहर अयूब ने भी कर दी दोनों ने कर दी दैट केस वाज ट्रांसफर्ड मर्डर केस था ये मर्डर केस था कंप्लेंट थी अभी वो दैट मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कंप्लेंट केस वाला था उसकी पिटीशन खारिज कर दी और दूसरी उन्होंने कहा कि ठीक है ये अभी कॉग्निजेंस उसने इंक्वायरी नहीं की थी उसमें वो जजमेंट हम दे रहे हैं जनाब वो खुद देख लीजिएगा रिपोर्टेड है अनरिपोर्टेड नहीं रिपोर्टेड है जी साइटेशन दे दें बताइए जी मुझे दे दो 1968 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल ये कराची है ना 16775 और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या गई 1675 सर 1675 वेरी राइट सर ठीक 1675 इसमें क्या था कि यू कैन डू इट हाँ जी
it can be transferred. यस उन्होंने ये बात नहीं कि इस इशू को नहीं डिस्कस किया कि 374 अच्छा, okay. ये आप खाली बता रहे हैं ऐसा केस हुआ था। नहीं ये हुआ और उसमें दोनों पार्टी ने कहा, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके कहा मैजिस्ट्रेट। इसमें कंफर्मेशन की बात का क्या हुआ? कौन सी कंफर्म, वो फैसला ही नहीं जो अभी तो ट्रांसफर हुआ अच्छा, ठीक है, उस ट्रायल की, वो तो फिर वापस हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 496। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेनेंट 1965 कैसे 68 का तो हाई कोर्ट का केस है। सर वो 65 में फरवरी अब आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लेट हुआ। ये रिपोर्ट लेट हुआ है। रिपोर्ट PLD कब की? PLD है सर 1965। ये रिपोर्ट लेट हो गया, वापस भेज दिया, वो वापस भेज दिया। पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 496। ये रीजंस क्या दी थी मलिक साहब वापस भेजने की? सर वो रीजन इसका मैडम ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उस पे कुछ किया ही नहीं है, अभी तो इंक्वायरी नहीं की, तो कैसे ट्रांसफर होगा? प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं। और दूसरा केस ट्रायल की और कोई कुछ नहीं, एक और है जी। वो है केस, वो जो साबिक गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान, उनका केस भी ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में, मगर वो भी दोनों की रिक्वेस्ट पे हुआ था, कंप्लेनेंट भी और दूसरा भी। उसका ट्रायल हुआ नहीं हुआ ये कुछ नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने अपने तौर पर भी हाई कोर्ट से पता करने की कोशिश की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें, बट वो बरी हो गया मेरा, मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ट्रायल हाई कोर्ट में हुई थी, हियरिंग दी केस, और वो उसमें बरी हो गया। असद Malik Asad was the accused. मगर that is not a reported judgment, इसलिए हमें नहीं मिली। I don't think it was reported. It was not. But it was, this question was not considered. No. self defense was taken. वो भी जजमेंट लिख लीजिए, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, कौन सी यार क्या करती हो? पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1969 पेज 1058 लाहौर का केस है जी। ये अमीर मलिक यही वाला अमीर नहीं, अमीर मलिक क्या नाम ने बताया? मलिक असद ये वाला केस है असद का जी। ये बच्चे चौधरी साहब फरमा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही फरमा रहे हैं। मुझे भी ऐसा बताया गया कि वो बरी हो गया, मगर मेरे पास जजमेंट नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं बताई बात, क्योंकि मैंने कहा कि फिर वो डिफिकल्टी है। बट एंड इसमें भी दोनों ने कहा कि ट्रांसफर कर दे। और ये जो पॉइंट मैंने आज रेज किया 374 का, दिस हैज नॉट बीन कंसीडर्ड इन एनी जजमेंट। वो अगर इकट्ठे लोग तो वैसे ही नहीं वो हो गया ना जी। नहीं, पहले भी दोनों ने कहा ना जी, दोनों केसों में। in this jurisdiction, should we expound on this or not? In this case, No, not at all, not a touch even. आप देख रहे हैं, मैं कहते हैं पढ़ देता हूँ। नहीं, हम आप जो jurisdiction इस्तेमाल कर रहे हैं advisory, should we expound on section 526 read with 374 or should we not? I say you must. Sir, you are here to do complete justice. Not with the people, but history as well. Or something, which has not been considered by any court before. नहीं, ये रेज कहाँ से कंसिडर होता जब आप नोटिस ही नहीं कर रहे? Is this a good time to break now? मैं तैयार हूँ जी, जब अभी कर ले। नहीं, मेरा मतलब कि आपका कोई सीक्वेंस नहीं तोड़ना चाहते हैं। सब ये हो गया जी, ये ट्रांसफर की हद तक मैं आई थिंक आई एम क्लियर। 374 को भी आपने मीट कर लिया, कर लिया, वो नहीं हो सकता। और आपका ख्याल ये है कि सेशन ट्रायल जो है वो ट्रायल मर्डर केस जो है उसको ट्रायल पे नहीं जाना। नहीं, मेरा ये हर केस जिसमें डेथ सेंटेंस है। Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my very good interpretation. Very good interpretation. I must appreciate. Finally. Thank you, sir. Thank you. आधा घंटे में ठीक है? Is that good enough? आधा घंटा ठीक है जी। Is that good enough for you? और 2:30 बजे इंशाल्लाह। 2:30. Thank you. देख लेना, शायद रख लेना काशी साहब ने।